स्टार्टअप्स ने बेटर पेशेंट एक्सपीरियंसेस के लिए हेल्थ केयर सेक्टर में एक बड़ा ही रेवोल्यूशन लाया है। आप कोविड के पहले की बात करें या ड्यूरिंग कोविड या पोस्ट कोविड, आपने देखे होंगे कई सारे ऐसे हेल्थ केयर स्टार्टअप्स हैं जो इंडियन हेल्थ केयर इकोसिस्टम में आए हैं और उन्होंने कई सारे इनोवेशंस लाए हैं। ये जो हेल्थ केयर स्टार्टअप्स हैं, उन्होंने कई तरह के चैलेंजेस को भी सॉल्व करने की काफी कोशिश की है। कुछ बड़े चैलेंजेस जो अपने हेल्थ केयर सिस्टम के हैं वो है अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी। और किस तरह से ये जो हेल्थ केयर स्टार्टअप्स है वो इन चैलेंजेस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, पेशेंट्स को बेटर पेशेंट एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ ऐसे कई सारे सेक्टर्स हैं जिसमें पहले डिजिटलाइजेशन की बात भी नहीं होती थी, आज उसमें डिजिटलाइजेशन हो पा रहा है और पेशेंट्स घर बैठे वीडियो कंसल्टेशन कर पा रहे हैं या अपने मोबाइल फोन पे अपने हेल्थ केयर से रिलेटेड डेटा को एक्सेस कर पा रहे हैं। हाय, मैं हूं स्मिता कुमार और मेडी सर्कल में जैसे मैंने बताया हम एक हेल्थ केयर स्टार्टअप सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज में हम इंडियन हेल्थ केयर स्टार्टअप्स के फाउंडर से बात कर रहे हैं ताकि ये जान सके कि किस तरह से उनका जो हेल्थ केयर स्टार्टअप है इंडिया को इकोनॉमिकली और सोशली स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद कर रहा है। आज इस पहल में हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर सतीश एस जीवनवारी से। डॉक्टर सतीश एआई हाईवे के सीईओ है। ये सक्सेसफुल बिजनेस एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज और एक्सपर्टीज के साथ एक बिजनेस हेल्थ केयर लीडर है। एआई हाईवे का जो एम है वो दुनिया भर में हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स को कनेक्ट करना है और मेडिकल डायग्नोसिस की एक्यूरेसी में इंप्रूवमेंट लाना है, जो उन्होंने किया है प्री स्क्रीनिंग टेक्नोलॉजी के साथ। एआई हाईवे का मेन एम वर्ल्ड वाइड और ग्लोबली पेशेंट्स को समर्थन करना है, पेशेंट्स को एक बेटर प्लेटफॉर्म देना है प्री स्क्रीनिंग टेक्नोलॉजी के साथ। एआई हाईवे का एम्स जिस तरह से मैंने डिस्कस किया कि पेशेंट्स को हेल्प करने वाला है और साथ ही साथ वो सेल्फ मॉनिटरिंग प्रदान करता है ताकि पेशेंट्स खुद से अपने हेल्थ के जो भी एस्पेक्ट्स हैं, वाइटल्स है, उन्हें चेक कर सके और वो किसी बीमारी से जूझ रहे हैं या नहीं, या वो कितने हेल्दी हैं ये जान सके। एआई हाईवे ने कोविड-19 में एक बीटा स्टेज के लिए प्री स्क्रीनिंग प्लस ट्राई एज टूल भी डेवलप किया है ताकि होम आइसोलेशन में पेशेंट्स की मदद की जा सके, ताकि क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स में अगर भीड़ हो तो पैनिक कंडीशन से बचा जा सके और वो सेल्फ लेवल पे भी अपने को काफी हद तक संभालने में सक्षम हो पाए। हेलो डॉक्टर सतीश, वेलकम टू मेडी सर्कल। Thank you, Smita. Thank you so much for having me on your show. So we are very pleased to have you with us, डॉक्टर सतीश। एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आईवीईएफ के एक अनुमान है कि करीब 2022 तक में जो इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर है उसका वैल्यू करीब $372 बिलियन यानी $372 बिलियन हो जाएगा। हेल्थ केयर में कई सारे वैरिड सेक्टर्स हैं, तरह तरह के सेक्टर्स हैं, जैसे टेलीमेडिसिन हो गया, ऑनलाइन फार्मेसी हो गई, पर्सनल हेल्थ मैनेजमेंट, फिटनेस, वेलनेस, होम हेल्थ केयर है। साथ ही साथ सीनियर सिटीजन्स के लिए जो एक्सक्लूसिव पेशेंट एप्लीकेशंस हैं, मेडिकल डिवाइसेस हैं, डायग्नोस्टिक्स, बायोटेक, आर&डी, जेनोमिक्स, बहुत सारे हैं, लिस्ट काफी लंबी है। तो आपके हिसाब से जो इंडियन हेल्थ केयर स्टार्टअप्स है वो इंडिया की इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ में किस तरह से कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं? ठीक है, आपने ये बिल्कुल सही बात किया है। सो व्हेन वी टॉक ऑफ हेल्थ केयर देयर आर 5 स्टेक होल्डर्स, लगभग 5 इसमें लाइक स्टेक होल्डर्स है। फर्स्ट इज पेशेंट्स एंड सेकंड जो है दूसरा फिजिशियंस, थर्ड व्हाट वी कॉल प्रोवाइडर्स और हॉस्पिटल्स, and then comes pharma and medical devices, and then there is a whole partner ecosystem. So जो मैं देखता हूँ जैसे ये पूरा इकोसिस्टम है, इसमें पेशेंट सबसे लाइक इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है। तो वट एवर वी डू और ऑल द अदर स्टेक होल्डर्स, इट हैज टू बी पेशेंट सेंट्रिक। एंड जैसे हम सब ने देखा कोविड पैंडेमिक में, we saw all the shortcomings of the healthcare ecosystem, and it kind of got exposed, right? And if you ask how startups are playing a key role, I would like to quote few examples here. जो काफी बड़े MNCs और large organizations है, वो एक तरह से रेड वोल्वो बस जो बेंगलोर में आप देखते हो उस तरह है। अगर लाइक इफ दे हैव टू टेक अ क्विक टर्न, वो आप मतलब काफी नेक्स्ट सर्कल तक जाके ही मुड़ सकते हैं। बट जो स्टार्टअप्स है, दे आर लाइक एन ऑटो रिक्शा।
So when you are in the midst of pandemic and you have low resource settings, so वो कहीं भी ऐसे shortcut लेके innovation quickly करके they can put across solutions. So that is first in terms of being agile and having that lean mindset. And second, I would say the healthcare startups can impact by creating huge jobs. That's also one of the key factors here. And we saw basically, if you look at, there are three aspects, right? Like one is access. And because India ka population is 1.35 billion, and we always see that there is a urban-rural divide. So we saw that there was a multifold increase in teleconsultations. And because of these digital solutions, you could kind of bridge some part of the access issues. And also, generally we see that the vaccines take about 10 to 12 years for development, but you will see that even India contributed in a big way, and we were able to come up with vaccines in just about 10 to 12 months, right? And even in terms of the last mile connectivity, how do you cater to the even the tier 2, tier 3 towns? So we have seen startups play a key role across the entire value chain. And that's where I feel the Startup India movement, which was started a few years ago, and the support that we got from all the government agencies has been excellent. And when the startups worked with the large healthcare organizations, medical devices, pharma companies, so it's a cohesive ecosystem, which I think is good for that stakeholder called patient, I think. और सतीश, आपकी कंपनी का नाम, स्टार्टअप का नाम एआई हाईवे है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। तो आपने इसका नाम एआई हाईवे क्यों रखा, और इसके जो प्रोडक्ट्स एंड ऑफरिंग्स है वो किस तरह से लोगों को बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने में सक्षम है? Right. So I'll tell you a bit, a very short story why we named it AI Health Highway. So if you look at healthcare, it is seen as equivalent to hospital care. जैसे हम healthcare बोलते हैं तो हमारे दिमाग में hospital का नाम, but हॉस्पिटल में पेशेंट तब पहुंचता है जब वो पूरा बीमार हो गया, एंड देन देयर इज कॉम्प्लिकेशंस एंड सो ऑन. बट वी फील देयर इज a very important element before he reaches the hospital. So हमारा ये सवाल था कि why should we wait for a patient to fall sick and then come to healthcare, right? So our focus has been on the primary and preventive healthcare, and this is where we feel in healthcare we are doing the work which is similar to laying that 5G infrastructure for telecom. So we have to connect the primary healthcare ecosystem to the hospitals. So that is where it is like bridging that gap with the highway. And how will this highway work? Because you have to build the artificial intelligence enabled ecosystem, right? So we focus mostly on the primary and preventive healthcare ecosystem. So our first product is AI Steth, which is a smart stethoscope to screen, detect, and predict cardiorespiratory disorders. And why we started working on this product? Because the non-communicable disorders are the world's biggest killer. We lose 41 million patients every year, right? And there are, if you look at the cardiology screening landscape, most of like ECG is used for acute coronary events, and then we have echo. On respiratory, we have chest X-ray, but most of these are bulky devices which are used in hospitals. So a lot of patients meet doctor in a clinic. As you go to tier 2, tier 3 towns and villages, it's at the primary healthcare clinic, and there you don't have all these equipments. So that's how we started working on AI Step for screening and early detection of cardiac and respiratory disorders. So our goal is to reduce 25% premature deaths by 2025. So that's the motto with which we work. So AI Step is the first product, and during COVID last year, we launched a pre-screening and triage tool. And why this was important? Because we did not have the healthcare infrastructure or so many doctors to handle all the crowd. So we thought, while there is excellent work being done by startups and large companies in the hospital sector, we thought, how can we reduce their burden? So if we came up with this clinical risk assessment tool, which is led by a nurse, and it helps identify who is in low, mid, and high risk, and hence who can be managed at home isolation, when to refer,
So this helps reduce the burden on the hospital. So these are two of our products actually. Definitely. So have you gone the funding way yet, Satish? Like, or you are still bootstrapped? Yeah. So we were bootstrapped for the initial 2 years. In fact, we started in the US. We were part of few accelerators, and then we were part of SoundHub in Denmark. Okay. So we got some research grants from US, and then Atal Innovation Mission. We are also part of MIghty, Ministry of Electronics and Information Technology. So initially we started bootstrap, then we got some government grants, and last year we raised our pre-seed, which was led by Social Alpha, Mr. Lakshmi Narayan, who's the CEO of Cognizant, and then Kiratsu Angels. That's great. So congratulations for that. एक आखिरी Thank you. सवाल आपसे करना चाहूंगी कि बहुत सारे challenges हैं हेल्थ केयर सेक्टर में, जिनमें से कुछ है अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी. इनमें से कौन से इश्यूज को आपकी हेल्थ केयर कंपनी जो AI हाईवे है वो एड्रेस कर पा रही है और कैसे? Right. So in fact, we touch on all these three important issues, and I'll tell you how. Because currently, if you look at most of the screening and early diagnosis in both cardiac and respiratory disorders happens in the hospital. So by bringing in AI Stat at the primary healthcare clinic, we are shifting the screening from hospitals to OPD at the primary care clinic. So it means that there is a chance of detecting diseases much early. So that is how we are tackling the access issues. And most of the hospital-based diagnostics are like 10 to 100 times costlier. Like not every doctor can buy an ECG machine or have the echocardiogram and so on. So like a GP who's practicing in a village, right? He will have his stethoscope. So that's where we are helping him by bringing AI Stat. How can we have the knowledge of a cardiologist or a pulmonologist through artificial intelligence and machine learning, and we can help him in better diagnosis. So that is how we are trying to reduce the cost. And if you see, all these days, the stethoscope, what the doctor could hear, heart and lung sounds, was a subjective finding. So we are bringing in visualization, which makes it more objective. And that is how we are tackling the quality issues. So we kind of focus on all these three problem statements. That's great to know. Satish, would you like to share any experience from your startup journey, which may inspire the healthcare entrepreneurs who are planning to start with their own ventures? Yeah. So I think too much of planning and analysis is like too much of analysis leads to paralysis is what we say. So I think we have to take risks, and but it doesn't mean that you should not plan for things. You should definitely plan, but I think that risk taking capabilities are very important for quality for an entrepreneur. And especially we hear a lot of these Western concepts like fail fast and move to the next idea. But we have to be very careful. These may not be relevant, especially for Indian startups, and more so in the healthcare. You have to be really patient if you are working on any idea in healthcare and in medtech. So the regulatory ecosystem and all of this, it takes quite a bit of a time frame to come to the market. So I think perseverance is very important. And when we started, we really didn't know that we would be selected in the US accelerators in Denmark. So we have been part of accelerators in Singapore, Denmark, and US. So I think having that positive outlook and a frame of mind, probably you should do a thorough study of the space that you are looking at. Where is the problem? So as I said, like that 5P stakeholders, right? Like if you are able to add value, either you are saving time or you are able to save cost and adding value, you'll definitely be able to find your sweet spot is what I could say. So that's some golden advice from Professor Dr. Satish, who's actually leading AI Highway. That's a healthcare startup which is into early diagnosis screening and also into managing how these primary healthcare setups are working, where the patient's diagnosis is really, really difficult sometimes because they need to have a lot of bulkier devices. But as the motto of the company says, that they
we are aiming to reduce around 25% deaths by 2025. That's a very noble aim to have. Wish you all the best, Sapesh, for all your future endeavors. And thank you so much for coming to MediCircle. Yeah, thank you, Smita. Thank you for having me on your show.